What is past, present, future? समय, राइट, काल. सो इन हिंदी वी कॉल इट, हिंदी में हम कहते हैं वक्त या समय को. किसी ने मुझे कहा था कि मैं हिंदी में भी कुछ बोलूं, सो आई एम मेकिंग इट टुडे. भूत, काल, वर्तमान और भविष्य. सो भूत जो होता है वो हमारे हिंदुइज्म में भूत नहीं है. इट्स नॉट अ घोस्ट, इट्स नॉट एन एनर्जी. ये एक रैंडम वर्ड है जो ऐसे पिकअप कर दिया गया है. इन जनरल दैट इज समय, इट इज़ काल. तो जब आप ध्यान करेंगे, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जी, कोई घोस्ट, कोई वैम्पायर, समथिंग लाइक दिस, स्पिरिट्स आर डिस्टर्बिंग. But they're not there. First of all, how do you have to take them? If you take them as bhoot, something of the past, it doesn't work. भूत क्या है? भूत आप ही हो. वो तो आपकी कर्म है, आपकी कमाई है. जो राहु एंड केतु हम कहते हैं ना, राहु इज द डेमन हेड विच इज़ द फ्यूचर, केतु इज द टेल ऑफ द स्नेक विच इज़ द पास्ट. वट आई एम सेइंग इज कि आप इनको भूत मत सोचो. ये एक योनि है. योनि, योनि समझ रहे? इट्स लाइक अ सेपरेट species. It's a rebirth. They're not the same humans that have just lost their outer shell and are surviving. First of all, even if that's happening, they're not of the past, they are present, and they have a future. They usually have longer, presence than you. They could be older than you. Maybe that's why when these things used to materialize, people used to think, oh my god, it is so scary. It's like a human, but it is so old. So they probably start calling it भूत. वो उसको भूत बुलाने लग गए. But वो भूत नहीं है, वो घोस्ट है. जैसे एक turtle है. Have you ever seen a turtle? There are a lot of turtle and tortoise species which live really, really longer than us. Very, very long. Sometimes 700-800 years. There are such pakshis, such birds also. Although now they are like assumed to be mythological creatures, but who knows? They exist somewhere. There are such trees. तो क्या वो चीज़ें भूत हो गई? They are ancient, but are they like भूत? Are they just of the past? No, they are still present and they have a future because they have a different form of operating, a different OS, a different operating system, a different lifespan. तो यही होता है इन चीज़ों के साथ. सत्य देखोगे, सत्य सोचोगे, सत्य मिलेगा. तो वो भाव नहीं आएगा जिससे भय आएगा, और आप इसको जीत लोगे. व्हेन यू आर इन द ट्रूथ, you will be able to overcome the fear of such a resonance, and you will treat it like what it is. It is a rakshasa, an asura, a demon, negative entity, a spirit, a ghost, a demon, a devil, and then you can easily let it go. Bye bye.